हवाले से। नेक्स्ट आंसर हमारे पास है, वही फिर रेपिटेशन हो गई, लाइफ हैज लवलीनेस टू सेल, म्यूजिक लाइक अ कर्व ऑफ गोल्ड, सेंट ऑफ पाइन ट्रीज इन द रेन, सेंट खुशबू ऑफ पाइन, पाइन स्नोबर के दरख्तों की, इन द रेन बारिश के अंदर, आईज दैट लव यू, आर्म्स दैट होल्ड, आईज जो है वो क्या करती हैं, लव्स यू, और आर्म्स क्या करते हैं, हग करते हैं, होल्ड करते, कडल करते हैं, एंड फॉर योर सेपरेट स्टिल डिलाइट, और आपकी क्या चीज जज्बात को अभी तक क्या करते हैं, डिलाइट, मुतासिर कुन करते हैं, खुश करते हैं। हॉली थॉट्स दैट स्टार द नाइट, जिस तरह से रात को रोशनी स्टार्स के जरिए से खूबसूरत मंजर होता है, थॉट्स जो है वो मुअज़्ज़िज़ किस्म की हो तो वो भी अच्छी बना देती है। अब जरा इनकी एलिब्रेशन देखते हैं कि क्या इन द सेकंड स्टांजा द स्पीकर रिपीट्स द इनिशियल ओपनिंग लाइन, वही लाइफ हैज लवलीनेस टू सेल, life has loveliness to sell. She goes on to describe a number of other aspects of experience one should look for. These elements are not all exclusionary. Any person could find these movements and add them to their life. First, there is music. It is described as being like a curve of gold. म्यूजिक जो है, रिदम को कहते हैं। म्यूजिक जो है असल में क्या चीज है, रिदम है। जिंदगी के अंदर खूबसूरती पैदा करने का नाम मौसीकी है। यानी हर चीज एक अपने अपने टाइम के मुताबिक, अपने अपने अंदाज के मुताबिक होती जाए तो उसको क्या कहा जाता है, म्यूजिक कहा जाता है। लाइफ लाइक कर्व ऑफ गोल्ड, यानी जिस तरह से गोल्ड का कर्व होता है, ट्विस्टेड होती है, इसी तरह से This physical embodiment of music is intriguing. इंसान को क्या करती है, इंट्रीग करती है, अपनी तरफ कैप्टिवेट करती है। It allows a reader to imagine it as something to be had and kept within one's life. It shines like gold and has a similar value. यानी म्यूजिक की बिल्कुल उसी तरह से वैल्यू जिस तरह से क्या चीज है जी, गोल्ड की वैल्यू होती है। There is also the scent of pine trees, particularly when it is raining. This is a very particular moment, but many readers जो होते हैं वो could relate to these images depending on who is reading this piece, might stimulate one to recall moments in which they appreciated something similar. कुछ चीजें जो हैं वो क्या करते हैं, कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ उसको अप्रिशिएट नहीं करते। द सेकेंड हाफ ऑफ द पोएम मूव्स टू अ मोर इमोशनल पर्सनल एक्सपीरियंस लाइफ कैन गिव यू, जो आपको देती है। आईज दैट लव्स यू, आर्म्स दैट होल्ड, वन इज एबल टू एक्वायर दीज मोमेंट्स फॉर देयर ओन हार्ट्स एंड माइंड्स। Just like the water and fire, love is another element life has to sell. Having addressed one's emotional needs, the speaker turns to the spiritual. He does not define what kind of spiritual life has to sell. This way, the lines are not attached to particular religion or set of beliefs. इस तरह से कीट्स को आपने अगर अ थिंग ऑफ ब्यूटी के हवाले से अगर हमने उसकी एक पोइम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी कीट्स की, जॉन कीट्स की, अगर उसको देखें वो भी इसी तरह से चीज़ों को क्या करता है जी, रिलीजन दे। ही हैज नो रिलीजन बट लव बट ब्यूटी। उसके सामने सबसे बड़ा रिलीजन उसका जो है वो क्या चीज़ है, उसका ब्यूटी है। व्हाट शी डज डू, यहाँ पर इसके लिए बिलीव्स क्या चीज है जी, एक्सपीरियंसेस हैं इसके। व्हाट शी डज डू इज डिस्क्राइब एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्पिरिट। दिस कैन हैपन व्हेन होली थॉट्स एंटर वंस माइंड। वन शुड बी डिलाइटेड एंड थ्रिल्ड बाय देम। थर्ड स्टांजा एंड लास्ट स्टांजा, spend all you have for loveliness.
आपके पास जो कुछ भी है वो किस चीज़ के लिए खर्च कर देना है, वो इस खूबसूरत चीज़ों को हासिल करने के लिए। बट इट एंड नेवर काउंट द कॉस्ट फॉर वन वाइट सिंगिंग आवर ऑफ पीस बाय इट, इसे खरीदिए, एंड नेवर काउंट द कॉस्ट, और इसकी कीमत को कभी अंदाजा ना लगाए कितने लगते हैं, कैसे लगते हैं। और वन वाइट सिंगिंग आर, एक भी अगर आपको सिंगिंग आर जो है पीस सुकून का मिल जाता है, तो काउंट मैनी अ ईयर ऑफ सेट्राइव वेल लॉस्ट, एंड फॉर अ ब्रेथ ऑफ एक्सटेसी गिव ऑल यू हैव बीन और कुड बी। In the final stanza, the opening line is slightly altered, तब्दील कर दी गई है। Spend all you have for loveliness. Spend all the time they have pursuing loveliness. It is not something one should be frugal about. There should be no hesitation in one's heart that they should buy it. Once thought, once bought, one should also never count the cost. There is no cost that is too high. जिस चीज को खरीदना हो, there is no taste, there is, जब किसी चीज के बारे में आपका टेस्ट नहीं है तो उसकी जितनी भी कम प्राइसेस होंगे आप उसको नहीं खरीदोगे। लेकिन अगर आपका टेस्ट है किसी चीज के बारे में तो उसकी कीमत जितनी भी हाई होगी आप उसको खरीदेंगे। The last line display the appreciation the speaker has for the elements of life he has mentioned previously. He sees life as having no purpose other than to collect these sights, smells and sounds as they have great power. 1 minute of true happiness can erase many a year of strife. The loveliness of life removes the strife of the everyday. The entire poem is summarized into the last 2 lines, in which she asks that her readers give all you have been or could be to experience 1 breath of ecstasy. One should not hold back from something that could bring happiness. Beauty, loveliness and splendid things are the purpose of life. जिंदगी का असल मकसद ब्यूटी, लवलीनेस एंड स्प्लेंडेड थिंग्स आर द पर्पस ऑफ लाइफ, जिंदगी के यही पर्पस है। तो इनको खरीदने के लिए गिव ऑल यू हैव बीन और कुड बी टू एक्सपीरियंस ऑन, इन चीजों को हासिल करने के लिए जो कुछ भी आपसे हो सकता है आप क्या कर लें जी, उसको खर्च करके इन चीजों को गेन कर लें। तो ये थी पोएम बार्टर। बार्टर सिस्टम आपने सुना होगा, ये सिस्टम होता था, यानी चीज़ों को देकर चीज़ों को गेन करना, एक्सपीरियंसेस देकर एक्सपीरियंसेस गेन करना। ठीक है जी। तो ये इस पोएम का जो थीम था, ये इस पोएम के हवाले से जो बात थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी पोएम में फिर बात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।